Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Arya Vahid, and in this video we are going to start the exercise 4.3. So in the previous lecture we have discussed all the questions of 4.3 till the question number 10. So in the first video we have discussed first three questions of it, then we have discussed 4 to 9 questions, and then at the last we have discussed the question number 10 of exercise 4.3. But now we are going to start question number 11 of this exercise. So the question of this question is that you have to find a equation of a perpendicular bisector of the line segment joining the points, and you have given the 2 point A and point B. So उन्होंने सबसे पहले आपको कहा है कि you have a line this line is A point, this is the B point. ठीक है, I'm not writing the coordinates of them, you know already them. Okay, so I am writing them like the A coordinates are 3 and 5, and the coordinates of B are 9 and 8. Now they have say a line is perpendicularly bisect that line. So how a line, so let's suppose this is the line which is perpendicularly bisect that line. Now I am giving the points to this line. Let's suppose this is the C point and this is the D point. Now C is the midpoint of A and B. Now the points or the coordinates of point C and point D is not given, so you have to find it, and after you have to find the equation of line also. So I have said that let C and D is perpendicular to AB, so CD is perpendicular to AB. Now we have to find the coordinates of C. So how we are going to find it? So we will add them. So you can 3 plus 9 divide by 2. सो 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 होगा, तो एक कोऑर्डिनेट सी का एक्स आ जाएगा, और 5 प्लस 8 होगा डिवाइडेड बाई 2 होगा. अब 9 10 11 12 12 बाई 2 हो जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू 6. so I am directly writing here the 6. 8 plus 5, what will be 8? It will be 13, and 13 is divided by 2, so it is not cutting down, so it remains in that value. Now we have find out the coordinates of C. So what are the coordinates of C? This is 6 and 13 over 2. Okay, now what is going to happen? Now we have to find the slope of AB, because we have to prove this formula that the slope of CD is equal to minus 1 over slope of AB. So we will put this formula in order to give this equation of line. So therefore we should have to find out the slope of AB, which is not given to us. So the point A and B is given, so we are going to find the slope of it. So how you can find the values? Let's suppose this is the x1, this is y1, this is x2, this is y2. Now puts the values like y2 is, I am writing here, so y2 is equal to 8 minus y1 is 5, x2 is 9, and x1 is 3. Now subtracts all of them to find out the answer. Let's suppose 8 minus 5, it will equal to 3, and 9 minus 3, it will equal to 6. So 3 1 the 3, 3 2 the 6, so the answer is equal to 1 by 2. So the 1 by 2 is the slope of AB. Now here the minus 1 is present. Now minus 1 over slope of AB is 1 over 2. Now 2 will be moved toward the upward, and it will becomes minus 2. So minus 2 is the slope of CD. ठीक है. Now we have to find out the slope of this line. So the slope of this line is minus 2. Now we have to put all of the values of C and here, like y remains here, minus y1 is the point C, this is the x1 of point C, this is y1, so y1 is 13 over 2 is equal to m of slope of CD is minus 2, so m is equal to minus 2, x remains same, and the x1 of point C is 6, so I am going to put that. Okay, now you are gonna to take the LCM of this fraction, so the LCM will equal to 2y minus 13 is equal to minus 2, it will remain same. Okay, now I am multiplying this 2 inside, so if I am multiplying it, I am directly writing here, so it will become equal to minus 2x plus 12. Okay, now I am multiplying this 2 on both sides, like I have multiplied this 2
as here I also multiplied with this, so it will become equal to 4x. Okay, and this will 12 to the 24, so it will become equal to 24, and minus 4x is remains same. And here this 2 cut it out. Okay, so I am raising it, so here this equations will remains. Now you have to convert this and you have to make a equation of this. So what you will do, 4x will move here, it will become positive 4x. Okay, plus 2y minus 13 and minus 24 is equal to 0. So minus 13 and minus 24, when you add both of them with the negative sign, they will equals to minus 37 is equal to 0. So this will becomes a line of equation, and this is the answer of this question. So we have solved the question number 11 from the exercise 4.3. Now we move towards the question number 13. Question number 2 is skipping from this video because the question number 2 is very long, and such types of question will never come in the examination. So move toward the question number 13. So let's start the question number 13. So what is the question of the question 13? So it says that you have to find equation. Again, equation, you have to find this equation, put the values in this equation, and you have given a line, and the points of this line is also given, and perpendicular to the line having so slope this. So what is given to you? You have given a line this, you doesn't know this is the A. Let's suppose this is the A point, this is the B point, but the coordinates of A and B are not given to you, and you have given that a line is perpendicular to it. Let's suppose this is the C and D, the line will be straight. Okay, now this is the C and D. Now the points of C is given to you, and which are minus 4 and minus 6. Only this is given, and the slope of this line is given to you, and the answer of this slope m is equal to minus 3 by 2. Only these information are given to you in this exercise. Now you have to find the equation of it. So the slope of given line, this line is this, but you have to find the slope of this line. So how you find it? The slope of required line is equal to minus 1 over slope of CD. ठीक है, so slope of CD कितना है? minus 3 by 2 है. So अब आप जब इसको solve करेंगे, so it will become equal to 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, इट विल इक्वल टू 2/3. ठीक है, सो ये आ चुका है. अब m की वैल्यू हमें पता है, x1 y1 ये हो जाएगा, ये x1, दिस इज द y1. वैल्यूज पुट करें और इक्वेशन बना लें. सो y माइनस y1 आपके पास क्या है? -6, सो दिस विल बिकम +6. m आपके पास है जी, सॉरी 2/3, 2/3, एंड x वैसे ही रहेगा, x1 आपके पास है -4, तो दिस विल बिकम +4. ठीक है, अब आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है. 3 को हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बिकम्स 3y प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू, यहाँ से ये 3 कट जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा. अब यहाँ पर हम 2 को इन साइड ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मैं डायरेक्टली यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इट विल बिकम इक्वल 2x प्लस 2 4 द 8. ये हो गया. अब हम इस वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएंगे. सो 2x प्लस 3y प्लस 18 माइनस 8. ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर प्लस का था, यहाँ आके ये नेगेटिव का हो जाएगा. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव का हो रहा है, तो आप इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएं. सो 2x प्लस 8 तो वैसे ही रहेगा. यहाँ पर -3y और -18 हो जाएगा. सो -18 प्लस 8, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, so this is the answer of that question. So we have find the equation from the required values. Now move toward the question number 14. So in the question number 14, you have asked that you have to again find the equation by this formula, and you have given a line through whose coordinates are uh, 11 or -5, and the parallel to the line with slope, एक parallel line है. ठीक है, लाइक सी डी, ये ए बी लाइन है, ये सी और डी है, और स्लोप आप लोगों को इस लाइन का दे दिया गया है -24. अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चंस में
स्लोप इस लाइन का नहीं दिया हुआ था, स्लोप आपको इस वाली लाइन का दिया गया था, ए बी वाली लाइन का, ठीक है, और हमने इसका फाइंड आउट खुद किया था। अब यहाँ पर हमें यहाँ इस वाली लाइन का यानी सी डी का स्लोप दे दिया गया है। सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन आपके पास -24 है। रिक्वायर्ड स्लोप भी हमें यही था, यही चाहिए था ना एम की जगह पुट करने के लिए, और हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। दिस इज x1, दिस इज y1। सो x माइनस वाई वन क्या है आपके पास -5, तो ये +5 हो जाएगा। m आपके पास -24 है, x माइनस x1 आपके पास है 11, ठीक है। So now we have put all of these values. Now we have to solve it. So first of all you multiply -24 to the inner bracket. So y plus 5 it will equals to -24x minus minus this will equals to plus, or multiply 24 with the 11 it will equals to 264, ठीक है। Now this x is negative, so we should take it to the other side. So how it will happens, let's see this. सो -24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +y +5 और दिस विल इक्वल टू -264 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप 5 इनको आपस में माइनस करेंगे, 264 में से 5 को माइनस कर देंगे एंड इट विल इक्वल्स टू -259 is equal to 0. So this is the answer of this equation. Now we are going to move toward the question number 15 and let's solve it. Now the question number 15 is very different from the question number 14, 13 and for question number 11. So it is quite different from them, but we have solved it in the previous video questions. So in the question number 15, they have given 3 points to you, A, B and C. And these are the points of a vertex. So first of a triangle. So first of all, I am making a triangle this. Okay, so this is roughly made. So please make it with the help of a scale. So this, let's suppose this is a point A, this is point B and this is the point C. Now the vertices of point A, B, C are given to you. Let's write up, like the coordinates of point A are -1 and 2, -1 and 2. Coordinates of point C are 2 and -4, and the coordinates of point B are 6 and 3. Now you have to even another line between this. They say that the midpoint of point A and point B is the point D. Now this point is the midpoint of it, and the midpoint of point A and point C is a point which is can be called as point E. Now I have joined this line because they say this is a line and which is parallel to BC. So they don't give the coordinates for points of point D and E. So you have to prove that this is the point is the half of point BC. So the length is different between them. So you have to find the length of it. First of all, we have to find what are the points of point D and E. So for finding them, we will use this formula. Okay. Now points D will be of this. Okay. So -1 +6 or 2 plus 3. Now solve them and the answer of them will be equal to, so minus this will become 5 by 2 and 3 plus 2 is equal to 5, so 5 by 2. So these are the coordinates of point E. So what are its coordinate? 5 by 2 एंड 5 बाई 2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है डी के। अब हमने ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम इन दो को लिखेंगे -1 +2 and this will equals to 2 and minus plus -4 आप कर देंगे। So its answer will be equals to 1 by 2 and it is equal to -2 by 2 होगा। So ये कट जाएगा। So simply मैं इसकी जगह -1 लिख रही हूँ। So these are the points of point E. Now I am putting the point coordinates of point E, which this is 1 by 2 and -1. Now we have find all of these points. Now we have to find out that these lines are parallel or not. So this step is optional. If you want, then you do it, and if you don't want, then cut this point off. You know how to find out the slope of BC, that you will write y2 minus y1 over x2 minus x1.
आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 7/4। ठीक है, सिमिलरली आपने डी ई का स्लोप निकालना है। सो x2 माइनस y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 आप करेंगे, इसका आंसर भी आपके पास 7/4 आएगा, जिसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमने ये प्रूव कर दिया, लेकिन हमने असल चीज़ क्या प्रूव करनी है, हमने इनका डिस्टेंस निकालना है। और वो अब आप लोगों ने कैसे निकालना है वो अब हम देखते हैं। अच्छा, पॉइंट डी और ई का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है। डी और ई के मैंने पॉइंट्स बिल्कुल यहीं पर ही लिख देती हूँ। डी के पॉइंट्स आपके पास ये हैं और ई के पॉइंट्स आपके पास ये हैं जो मैं अब लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास है x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, इसको मैं भी रेस कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इस यही वैल्यूज़ को इसमें पुट करते जाएं और आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो x2 आपके पास क्या है 1/2 माइनस x1 आपके पास क्या है 5/2। ठीक है, y2 -1 माइनस y1 5/2 है आपके पास। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम 2 आएगा, 1 माइनस 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया -4/2, नहीं हाँ जी -4/2 हो जाएगा। इससे कट करेंगे तो -2 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। -2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, इसके अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका भी आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने पर आपके पास -2 -5/2 इस तरह आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 6 7 आ जाएगा यहाँ पर 7 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसका स्क्वायर लेना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 था और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, 4 4 4 द 16 प्लस 49 प्लस 16 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 65/2। ऊपर ये ब्रैकेट वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है। सॉरी, ये 4 था ना, तो 4 इसका मैं स्क्वायर रूट अलग अलग ले लेती हूँ। जैसे इसका मैंने स्क्वायर रूट यूँ लिया, इसका यूँ लिया। सो जो 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं वो 2 के इक्वल आता है। सो हमने इसे जैसे यहाँ पर यूँ 2 पुट कर दिया है। सो ये आपके पास डी ई का आंसर आ गया। इसी तरह अब आपने बी सी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर बी सी का फार्मूला गिवन है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ जो है वो पुट करती जाऊँगी और आप लोग फिर इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। सो यहाँ पर हमारे पास x2 बनता है 2 -6 और y हमारे पास बनता है -4 -3। ठीक है, अब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 में से 6 में से आप 2 निकाल दीजिए और उसको स्क्वायर लीजिए तो आपके पास 16 आएगा। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, आपके पास 65 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो डी ई की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 65 का स्क्वायर रूट बाय 2 इस तरह आया था। और बी सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, स्क्वायर रूट 65। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं। सो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि ये इक्वेशन इस क्वेश्चन में प्रूव होता है और हमारा यही क्वेश्चन था। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया है। आगे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 और 20, ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। सो ये आपके पेपर में नहीं आने हैं। सो हम लोगों इनको करेंगे स्किप और हम लोग चलते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको ये से ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट दिए हुए हैं और उन हर पार्ट में आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी फाइंड आउट करना है, नॉर्मल फॉर्म भी फाइंड आउट करना है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड आउट करते हैं। क्या है, स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सो अब आप लोग देखें कि इसका आंसर क्या आता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लोगों ने y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, और y की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे कि आपने y की वैल्यू ये सी 4 है, इसको इस तरफ रहने देना है, बाकी सबको उस तरफ ले जाना है। सो असल में आपके पास क्या है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब y इधर ही रहने देना है, बाकी सबको उस तरफ ले जाना है। सो -4y यहीं रह जाएगा। यहाँ ये प्लस का है, वहाँ माइनस का हो जाएगा। ये भी प्लस का है, यहाँ ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हमने -4 को इसके साथ डिवाइड कर देना है। सो y इस तरफ रह जाएगा, -2x बटा -4 माइनस, सॉरी ये माइनस है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 11
और -4। ठीक है, अब ये आपस में कटेंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस भी खुद इस साथ कट जाएगा। y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x/2 और माइनस और 11, ये जो है ये दोनों ये ऐड प्लस हो जाएगा और 11/4 वैसे का वैसे रहेगा। तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म की तो इसकी निकाल लिया। अब हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है और वो अब हम लोग किस तरह से निकालेंगे वो अब हम लोग देखते हैं। अब हमने क्या निकालना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने 11 को उस तरफ ले जाना है। इस वक्त हम y को इधर रखा था, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। अब सिर्फ 11 इधर जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने। +11 कुछ इस तरह से इक्वेशन थी, सिर्फ 11 अब यहाँ जाएगा, बाकी सब यहीं रहेगा। इज इक्वल टू -11 हो जाएगा। अब इस -11 को आपने बोथ साइड डिवाइड करना है। सो इस तरफ भी ये -11 डिवाइड होगा, इधर भी, इधर भी। ठीक है, और अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो अब आप लोगों के पास आप अपने इस x और इस y को ऊपर अकेला छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है जो कुछ इस तरह होती है, x + y बटा a बटा b। ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन होती है, आपने इसको इस तरह बनाना है। सो यहाँ पर 2 और 4 लिखा हुआ है, हमने इसको ख़त्म करना है। तो हम 2 को नीचे लाएंगे, ये 11 से डिवाइड होगा, 4 भी इसी तरह हो जाएगा। सो यहाँ से ये 2 चला गया, ये 4 चला गया। ठीक है, तो और यहाँ पर ये 11 आपस में कट जाएगा। सो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, -11/2 और ये होगा -11/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, -1 नहीं 1। सो ये हमने इस इक्वेशन में प्रूव कर दिया है कि ये फार्मूला हमारे पास प्रूव होता है और ये हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल ली है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अब लास्ट क्वेश्चन हमने करना है कि हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म भी निकालनी है। अब नॉर्मल फॉर्म हम इसकी किस तरह से निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, किसी भी इक्वेशन की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है। ठीक है, हमने उसको फाइंड आउट करना है। सो इसमें अगेन आप लोगों ने 11 को उस तरफ लेके जाना है। सो 2x सो सॉरी सो 2x -4y + 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2x -4y इज इक्वल टू -11 हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है और यहाँ पर अब आप लोगों ने 2 और 4 इसका एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट आप करेंगे, इसका डिस्टेंस आपने 2 का स्क्वायर ले लेना है और 4 का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, -2। Now, by solving these equations, you will get 4 + 16 whole square root. Add 16 + 4, it will equals to square root 20. And the square root 20 will answer is equal to 2 square root 5. Now you have to divide 2 square root 5 with this equation. Now 2x ठीक है divided by 2 square root 5 ठीक है, ठीक है, plus 4y divided by 2 square root 5 is equal to 11 2 square root 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने 11 को इस तरफ ले गए हैं, इस वाली इक्वेशन को इस तरफ ले गए हैं, फिर ये हमने निकाला है। अब डिवाइड करने से जो कटता है उसको हमने काट देना है। ठीक है, इसमें 4 2 दा होता है, 2 1 दा 2 होता है। सो ये हम वैल्यूज़ कटती थी वो हमने काट दी, यहाँ पर माइनस आएगा। सो -x और स्क्वायर रूट 5 बचा है हमारे पास, प्लस 2y और स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 11 और 2 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास बच गया। अब हमने इसको कंपेयर करना है किसी इक्वेशन के साथ। इस वाली इक्वेशन के बाद x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। सो इससे कंपेयर करने से पता लगता है कि जो x को cos अल्फ़ा है वो 1/x के अलावा, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। सो x तो यहाँ पर पहले से ही है, x को साइड पे रख के बाकी जो वैल्यू बनती है वो cos अल्फ़ा की इक्वल होगी। किस तरह होगी वो हम ऊपर दिखाती हूँ, मैं ऊपर से मैं थोड़ा सा रेस करती हूँ।
सो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√5। इसी तरह साइन अल्फ़ा आपके पास इक्वल हो जाएगा अ, हमारे पास sin 2/√5 के, और ये वाली वैल्यू p के इक्वल आ जाएगी। सो आपके पास p इक्वल टू होगा, so now the p values will be equal to this 11, our 2√5 will be equals to the p. Now what you have to do, you have to find the cos alpha, so you put this value into the calculator and you will get the value of this, and you have to put this value, its value equal to 6.57 degree. Now you have to put this value in this equation, so x cos 116.757 degree plus y sin 116.57 डिग्री इज इक्वल टू 11/2√5। सो ये आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर आ चुका है। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट बी को करेंगे, उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी वाई की फॉर्म निकालनी है, वाई को इस तरफ रखना है, बाकी वैल्यूज उस तरफ जाएंगी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लोगों ने टू जो होगा उस इक्वेशन का वो उस तरफ लेके जाना है, बोथ साइड डिवाइड करना है, और नॉर्मल फॉर्म में भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। थर्ड पार्ट में भी आप बिल्कुल यही करेंगे कि वाई इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो निकालेंगे, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालेंगे, और फिर नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। I hope that you will like this video. If you like it, then please subscribe to this channel, like my videos, and also press the bell icon in order to get all the notification which I uploaded. So thank you so much. Meet you soon in the next lecture. Till up, Allah Hafiz.